Good afternoon. My name is Syed Mujtaba Ali, and I'm a research officer at the Center for Law and Security. And I warmly welcome my esteemed guests at the webinar series, which is a regular feature of the center. The topic of our discussion is Operation Azm-e-Istehkam, its challenges and implications. Operation Azm-e-Istehkam, launched by the Pakistani government, aims to strengthen national security of Pakistan. However, this resolve for stability holds potential risks and challenges that we will discuss with our three eminent guests today. I warmly welcome retired police officer and former IG Punjab, Dr. Syed Kaleem, defense analyst, Brigadier Mahmood Shah, and lastly, security analyst, Syed Muhammad Ali. It is an honor to have you all. This discussion will be moderated by Executive Director of Center for Law and Security, Mr. Azhar. Without any further ado, I would like to begin my discussion with asking uh, Sayyid Kaleem Imam about the operation. So, sir, Operation Azm-e-Istehkam is greatly being compared with military's previous operations. But recently, Prime Minister Shahbaz Sharif has stated that the operation will be launched in a comprehensive and a decisive manner. I would like to know what he meant by that, and I would like your take on it. So, sir, please take it away. डॉक्टर साहब आपका माइक जो है वो म्यूट है, उसको जरा अनम्यूट कर दें जी। Yeah, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Azhar, thank you very much. I'm honored to be in your program and also to see Mahmood Saab, who is a very senior and a very learned official that I've come across. And I'm grateful to Research Officer Mahmood Kaisar, who has been coordinating and who has been my student. So thank you very much. You see, my first argument is you need operations time should time because you have not been properly enforcing rule of law and law enforcement has been weak. As a result of which you come across uh, in every couple of years that you want to carry out in operations. So far, we have carried out 20 operations. Two of them were across Pakistan, and this was region specific. And on a lighter note, we have gone to IMF 22 times and we have conducted operations 20 times. So something is wrong. What is wrong? We don't force the rule of law. We believe that might is right. We are following the rule of the rulers. We are not trying to see and focus that our entire working and our entire operations and our entire functioning should rotate around public service delivery. And that is one reason we keep on going to the operations. Had we done some homework, we wouldn't have come across this manners that we are doing the operations again and again. Now here we have a statement that we are going for an operation. Then we have a statement that no is a new vision and we are going to operate differently. And then we have a third vision that it is going to be an intelligence-based operations. Already, a lot of operations are going on in KP and Pakistan, and now we have declared that we are officially going to do. Now, once we have done that, what are the possible or challenges and hurdles that we can see across? We can see strained relations coming up with our neighbors as we do, and this could lead to further regional instability. We would also see a significant political opposition from various political parties who have been arguing that they have been operations in the past, and this time they are saying that they are not involved and parliamentary consultation is required. So there's a discord. There's a risk of civilian casualties and displacement. Again, that's a challenge. Again, there's a question argued that we are not addressing the socio-economic issues and political premises, and we go after operations. All criminals must be taken to task. The question is, you also need to take non-kinetic lot of measures, non-traditional measures to ensure that people are attracted towards government functioning. Lack of coordination. We see that there's an issue of lack of coordination among the various stakeholders
be it law enforcement agency, military security establishment, or the intelligence agencies. Yes, there is a potential way forward, and the way forward is to take everybody along, make things inclusive, and you ensure that the citizens believe that what is being done is being done with their consensus. One good thing that happened yesterday is the apex committee meeting, and lot of grievances of the locals have been addressed. ठीक। अच्छा, मेरे ख्याल है आई थिंक वंडरफुली एक्सप्लेन। कलीम इमाम साहब, थोड़ा सा आपको ऑडियो का इशू है, मे बी आपको माइक थोड़ा सा जरा जो है वो एडजस्ट जो है वो करना पड़े। एंड अब आवाज आ रही है आपको? अब आवाज जी, अभी आई थिंक नाउ इफ यू विल स्पीक थोड़ा सा आगे आकर, तो फिर आपकी आवाज ज्यादा हमें क्लियर आएगी। आगे आ जाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सैयद मोहम्मद अली साहब हैज आल्सो जॉइंड अस, सो आई विल वेलकम हिम एज वेल। लेकिन महमूद शाह साहब, मैं अगला जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपकी तरफ लेकर आऊंगा। अब ये ऑपरेशन, जब हम ये कहते हैं कि ये पहले ऑपरेशन से डिफरेंट होगा, या फौजी क़यादत ये कहती है, तो क्या ऑपरेशन के डायनामिक्स बदल गए हैं या रिक्वायरमेंट्स बदल गई हैं? और सबसे बड़ा मसला ये कि लोगों के जहनों में अभी भी जब ऑपरेशन का नाम लिया जाता है, तो वो वही ऑपरेशन का जो है वो आता है, जिस तरह से ज़र्ब-ए-अज़्ब हुआ, राह निजात हुआ, राह रास्त हुआ। सो डू यू थिंक ये क्यों, जब ये कहा जाता है कि ये ऑपरेशन डिफरेंट है, तो इन व्हाट सेंस आर्मी, हमारी फौज जो है वो, या गवर्नमेंट जो है वो, ये कह रही है कि ये ऑपरेशन जो है वो पहले ऑपरेशन से जो है वो डिफरेंट होगा या उनकी तरह नहीं होगा? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वेबिनार, and I would like to say that in this case the major difference is that target area is extremely soft. We call this in the military terminology, the target area is extremely soft, and life of public has to continue. So therefore, launching of a major operation by the military in that sense is not required. It will be overuse of a force. But supervising in a certain manner these operations where you ensure that the daily life of the in the target area is not affected, yet the operation is carried out. This we are used to listening about military operations in the tribal area, where the target area was extremely hardened, and it was not for police or any law enforcing agencies to have confronted them there. So for that, of course, a proper military operation, and at the same time, you saw this, there would be evacuation of the civilian population, and the people in KP particularly got scared when they learned about the military operation Azm-e-Istehkam. Although I have been saying this from day one, that such an operation, unleashing of a division or a brigade, for that matter, into civilian area like Banu or go ahead, Lucky Marwat or D.I. Khan, is not required. And therefore, it has to be basically a police operation, but supervised by the military personnel who will be prepared to push in to where the police life is in danger. So I think this will continue like this, and this is a light area, soft area, and a lot of professionalism will be required to handle it, because after all, we are used to certain bunkers that we assault in war, and we also have seen that there are tanks in front and we have to assault these tanks. So this is the difference between just human beings, 3, 4, 5, 10, up to 10. They are the target within this civilian area, and for that you require more intelligence as to where exactly they are and what are the routes around, and how to tackle. And if the police force reaches around and with the normal rifle that they are equipped with, they can take on the target.
and the army continues to see. So I think that way, this operation, very light operation, but requires extreme professionalism in handling. Because the civilian have to, there's a man-endless highway which is passing through on one side of Banu, and on the other side, the other road, which is the old road, passes through Banu. So you don't have to block these. Let the traffic go, continue, unless it is absolutely essential. So I think this operation will take place while the civilian, the bazaars will remain open. आपको लगता है ये terrain different है, target जो है वो different है, लेकिन इसमें मोहम्मद अली साहब भी आगे, मैं I'll come to मोहम्मद अली साहब very quickly, लेकिन एक चीज जो कि कलीम साहब महमूद शाह साहब ने कही, और उन्होंने कहा कि it will be led by, ऐसा लगता है कि it will be led by law enforcement agencies, but आर्मी उसको सुपरवाइज करेगी. आर्मी हमेशा से कहती आई है कि you know, we can clear the area, but वो we can retake it, but rebuilding जो है वो सिविल इदारों का काम है, जिसमें और स्पेशली सिक्योरिटी उसमें की हो जाती है व्हेन इट कम्स टू सीटीडी और जो हमारी पुलिस ने करना है. बन्नू में भी अभी देखा, जो कल एग्रीमेंट हमने जो देखा है, उसमें भी यही कहा गया है कि सीटीडी और जो पुलिस होगी दे विल लीड द ऑपरेशन. सो डू यू थिंक हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग अब इतनी हो गई है, स्पेशली इन एरियाज एडजेसेंट टू बॉर्डर, कि जहां पर जो है वो दिस विल बी सफिशिएंट, या आपको लगता है कि इससे बढ़कर आगे जाकर भी जो है वो कुछ करना पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदद किया. मोहम्मद अली साहब सॉरी, मैं आपकी तरफ आता हूँ. दिस वाज फॉर कलीम. इमाम साहब मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिए, तो आई विल कम राइट टू यू. जी मैं बोलूं? जी मोहम्मद अली साहब, कैन यू हियर मी? जी आई कैन हियर यू. आपका सवाल मुझसे है या कलीम साहब? नहीं, मैं कलीम इमाम साहब से पूछा था अभी. लेट मी जस्ट वेरी क्विकली हैव हिज टेक ऑन दिस, तो मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ. अच्छा जी कलीम साहब. ओके अजहर साहब, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और मैंने देखे तकरीबन 35 साल लॉ एनफोर्समेंट में गुजारा है, और मेरा हमेशा आर्गुमेंट रहा है कि पुलिस पूरी दुनिया में एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, और पाकिस्तान में भी पुलिस है और दुनिया में भी पुलिस है. 9/11 का जब वाकया हुआ है न्यूयॉर्क में, इट वाज न्यूयॉर्क पुलिस, इट वाज हैंडलिंग एवरीथिंग, बाकी लोग उसके सबके सपोर्ट में आते हैं. मैं हमेशा से पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप पुलिस रिफॉर्म कराएं, पुलिस की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसमें सियासत खत्म करें, टेन्योर दें, ऑपरेशनल इकोनॉमी दें, और ये चीजें बंद कर दें कि पुलिस को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करें. टू बी वेरी फ्रैंक, इस वक्त सारी पुलिस आपकी जो है वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और वो इसका फोकस नहीं कर रही. मेरा दूसरा पॉइंट ये कि पुलिस को ड्राइविंग सीट में डालें. मिलिट्री इज अ वेरी सेक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन, और वो बहुत अच्छा काम करती है, उनकी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं, लेकिन उनकी इस तरह सामने आना दुरुस्त नहीं है. मिलिट्री में तो कभी आना है और शक्ल दिखा के चले जाना है, और ऐसा मैसेज छोड़ना है कि लोग उनसे उनकी इज्जत भी करें, एहतराम भी करें. वो पुलिस है जो कि 24 घंटे वहां रहती है. अब आप देखें बन्नू का वाकया हुआ, तीसरी बात है, क्या वहां का कोई पुलिस ऑफिसर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या आके कोई बयान दिया? वो इसलिए नहीं देते बयान में, क्योंकि वो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, अगर वो बोलते नहीं है, वो कहते हैं हमारा कोई रोल नहीं है. आपको मैं फ्रैंकली बताऊं, उनके आईजी से आप इंपावर की बात करें, कहते हैं हमसे कोई नहीं. Someone else is in the driving seat. मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इवन जब लाल मस्जिद का ऑपरेशन इधर इस्लामाबाद में हुआ है, मैंने ये कहा कि ये पुलिस को करना चाहिए ऑपरेशन, और पुलिस को फेस करेगी. आर्मी इज ऑलवेज देयर, मुहर्रम में आती है और बहुत सी ओकेजन में आती है, और हमारी स्ट्रेंथ है वो. लेकिन जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है उनको हैंडल करने दें. वो कम्युनिटी में रहते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, वो कभी अच्छा उनकी बेइज्जती भी होगी, इज्जत भी होगी, जख्मी भी होंगे, लेकिन पुलिस, लेकिन ये हम किसी और इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं होने देना चाहते. और इसीलिए मेरा कहना है कि गिव द पुलिस द ड्राइविंग सीट, लेट देम कॉल द शॉट, होल्ड देम अकाउंटेबल, गिव देम रिसोर्सेज. अब इस ऑपरेशन की भी जो आप बात कर रहे हैं, एपेक्स कमेटी के अच्छे फैसले, इसके बाद जो आपने बात की है कि हमारे पास दूसरा प्लान है, हमने फंड्स रिलीज करने हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, जॉब देनी है, एजुकेशन करनी है, हेल्थ एजुकेशन के काम करने हैं. अगर ये नहीं करने हैं ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं. दूसरी बात है कि आप नौबत ही क्यों आने देते हैं कि कोई ऑपरेशन हो. आप सारे साल जैसे आपको पता है कोई क्रिमिनलिटी कर रहा है, सीटीडी पुलिस आर कैपेबल, बट पुट देम इन द ड्राइविंग सीट. ठीक,
अच्छा मोहम्मद अली साहब, जब मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात की जाती है तो हमारे वो 9/11 के बाद से एक फ्रेज बड़ा आम हो गया, और उसमें वो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स जो है वो हमने, मेरा ख्याल है ये शायद एक अमेरिकन टर्म थी, एंड इट बिकेम सिनोनिमस विद एनी मिलिट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ऑपोजिशन तो है लोकल पॉपुलेशन की, पॉलिटिकल पार्टीज की, जो हम देख रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस चैलेंज फॉर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के, अगर इसकी एक विनिंग हार्ट्स एंड माइंड वाली स्ट्रेटजी जो है वो अगर तो होनी है तो वो किस तरह से अचीव की जा सकती है, और उसके लिए वे फॉरवर्ड जो है वो क्या होना चाहिए या हो सकता है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी जी। अच्छा देखिए, मैं एक अभी बहुत तवज्जो से बात सुन रहा था, जिस तरह महमूद साहब ने बात की और कलीम साहब ने बात की। देखिए, एक जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी की जब आप बात करते हैं ना, तो उसका एक ऑपरेशनल पहलू होता है, जिस तरह अभी वाज़ेह किया गया, कलीम साहब ने भी बताया और महमूद साहब ने बताया। लेकिन जब आप हिकमत अमली के लेवल पे बात करते हैं तो ये एक ऑपरेशनल इशू है, जिसमें मैं कलीम साहब की बात से एग्री करता हूँ कि पुलिस को या सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि वो उसी इलाके में परमानेंटली मौजूद होते हैं। जो थाना है वो अनलाइक मिलिट्री, वो थाने के अफराद, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने क्लियरेंस करवानी है या उसको एनओसी चाहिए, तो वो लोगों को जानता है, वो कम्युनिटी में रहता है, और वो रियासत की आईज एंड ईयर्स जो होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो वही होता है। उसको एक एडवांटेज है। फौज तो अपना एक ऑपरेशन करती है, क्लियर करती है, वापस चली जाती है, एंड में वो वहां मौजूद नहीं रहती, नंबर वन। तो उसका इफेक्ट टेम्पररी होता है, और अगर वो सक्सेसफुल ऑपरेशन कर भी दे तो उसको लास्टिंग एंड्योरिंग सक्सेस में ट्रांसलेट करने की लिए जो बुनियादी रोल है वो सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और उस इदारे के लोगों का, कम्युनिटी का, गवर्नेंस के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ये इस बात को बुनियादी तौर पे समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिकमत अमली के हवाले से बात की बुनियादी करना चाह रहा था कि देखिए, अगर काउंटर टेररिज्म की आप 100 साल की तारीफ पढ़ें तो बुनियादी तौर पे दो चीजें होती हैं इसमें, आसान अल्फाज में, कि जो बैड गवर्नेंस है या कोई सोशल ग्रीवेंस है, उसको आपका दहशतगर्द एलिमेंट एथनिक लाइंस पे, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे एक्सप्लॉइट करता है और अपने वायलेंस को जस्टिफाई करता है। इतनी सी बात है, ठीक है? तो आपने बिल्कुल सादा अल्फाज में तीन नुमाइंदों से है, तरक्की के हवाले से, रोजगार के हवाले से, खुशहाली के हवाले से, सलामती के हवाले से, उसको पूरा फौज ने या पुलिस ने नहीं करना, उसको अवामी नुमाइंदों ने करना है, जिनको इलेक्ट किया गया है कि वहां पे लोगों को उनकी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी की जाए, और उसको इम्प्लीमेंट जो है आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट ने करना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, वो तमाम मामला हैं। अच्छा, अब जब बात वहां से आगे बढ़ जाती है, कहीं पे दहशतगर्द पनाह ले लेते हैं या छुप जाते हैं, तो उसके लिए हिकमत अमली और तरह की होती है, जिस तरह अलकायदा है या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, दाइश है, जो कि अमॉर्फस है। लेकिन कुछ इस तरह की जब खतरात इससे भी बढ़ जाते हैं कि कुछ इलाके को उन्होंने कब्जा कर लिया है और उसमें अपना निजाम या अपनी सोच मुसल्लत कर दी है, तो वो एक डिफरेंट तरह की हिकमत अमली होगी। आप बात समझ रहे हैं? तो अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो खतरा है दहशतगर्दी का, वो तीसरे लेवल का नहीं है। इस वक्त कोई इलाका, कोई सिटी, कोई टाउन, कोई गांव उनके कंट्रोल में उस तरह नहीं है, पहली बात। अच्छा, इसी की वजह से जो आपको हिकमत अमली चाहिए काउंटर टेररिज्म की, वो लार्ज स्केल काउंटर टेररिज्म के मिलिट्री ऑपरेशन की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खतरा है उसको भांपना, जांचना, पहचानना और उससे निपटने के लिए बेसिकली आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना है कि जनाब आपके मोहल्ले में, आपकी कम्युनिटी में ये 4 लोग हैं, ये कहाँ मौजूद है, डायरेक्टली वहां पे जाके आपने उनको कैप्चर करना है। इसके लिए आपको लार्ज स्केल पकड़ धकड़ और कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये बुनियादी बात समझने की है। इसमें आपकी इंटेलिजेंस का अच्छा होना, इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का बहुत जरूरी है। और उसमें भी मैं कहूंगा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो सिविलियन इदारा है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और वही लोग जो हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हैं, आईज एंड ईयर्स भी हैं।
अच्छा, उसके बाद फिर सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, एफसी हैं, रेंजर्स हैं, और उसके बाद लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फौज होती है कि अगर कोई झड़प हो रही है, कोई ऐसा मामला है, हाँ, तो उसमें एक लिमिटेड काइनेटिक एक्शन करके वो वापस चले जाते हैं। तो इस ठीक, पूरी जामिया हिकमत अमली को समझना भी जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्विकली मैं 1 मिनट में ऐड करूंगा रहमान जी, साहब, वो ये है कि फौज की क़यादत में रैंक एंड फाइल और अफसरों में इस वक्त एक बहुत ज्यादा इस बात का कंसर्न पाया जाता है कि हाँ, जनाब दहशत गर्दों से लड़ने के लिए तो हम तैयार हैं, रोजाना कुर्बानियां भी दे रहे हैं, सैकड़ों शहादतें भी दे चुके हैं, लेकिन जो उसकी बुनियादी वजूहात हैं वो 4 डोमेन्स में हैं। उसके हवाले से सियासी कमिटमेंट या क्लैरिटी या रिसोर्स एलोकेशन बदकिस्मती से नेशनल एक्शन प्लान के 10 साल गुजरने के बावजूद 4 डोमेन्स में नजर नहीं आ रही है। राइट, नंबर 1 आइडियोलॉजिकल है कि जनाब हाँ, वो मदारिस और सीड्स ऑफ लर्निंग जहां वो नफरत और इस्लाम की डिस्टॉर्शन का बीज बोया जा रहा है और उसको पानी दिया जा रहा है, उस प्रोसेस को तो आप खत्म करें। उसके लिए ठीक, 15,000 ऐसे मदारिस हैं रहमान साहब जो कि अभी भी अनरजिस्टर्ड हैं। अब ये काम अच्छा, तो फौज ने नहीं करना ना। देखिए, जो अनरजिस्टर्ड मदारिस हैं, मदरसा क्या होता है रहमान साहब? मदरसा जो होता है एक एनजीओ होता है ना, वो सोशल वेलफेयर एनजीओ, का काम स्कूल उसे करता है। कह लें, स्कूल या एनजीओ है, एग्जैक्टली, राइट, एनजीओ है ना। तो आप लॉयर हैं, आप मुझे बताएं, तो एक एनजीओ के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है एनओसी की, ऑफ कोर्स, रजिस्ट्रेशन की, ऑडिट की, टैक्स रिटर्न्स की, वो सारी चीजें एक मदरसे के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई होती? हमें पता होना चाहिए कि जनाब फंडिंग कहाँ से आ रही है, करिकुलम कहाँ से आ रहा है, लोगों की रिक्रूटमेंट का क्या तरीका है, उसके बाद उनको क्या राइट, किया जा रहा है। ये मामलात को तो जाहिर बात है सिविलियन जो हुकूमत है और लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं उन्होंने पूरा करना है। दूसरी डोमेन जो है वो लीगल है, यानी हाँ, कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जो मुकदमात इस वक्त जेर अल्तवा हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जल्द अज जल्द जो है निपटाया जाए, अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि अदालती निज़ाम के ऊपर न सिर्फ अवाम का, आलमी बरादरी का भी एतमाद इंप्रूव हो सके, बल्कि दुश्मन और दहशत गर्दों में भी एक खौफ फैले कि कानूनी एतबार से भी हमें सजा मिल सकती है, सिर्फ फौज ही एक इदारा नहीं है जो कि आगे हमसे हाँ, लड़ेगी। ठीक, ये दूसरा पहलू है। अच्छा, तीसरा पहलू जो है वो इकोनॉमी का है कि किन क्रिमिनल नेटवर्क्स के जरिए, जराए के जरिए, स्मगलर्स के जरिए, अगवा बराए ठीक, तावान के जरिए उनको माली मावनत हो रही है, उसके उनके इकोनॉमिक सपोर्ट बेस को भी हाँ, आपने ब्रेक करना है। ये उसका तीसरा पहलू है, ये भी सिविलियन डोमेन में है। ठीक है। और चौथा प्रॉन्ग जो है इसका डिप्लोमेटिक है कि जिन ममालिक से फंडिंग, वो लिटरेचर और वो अफराद आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, काइनेटिकली, लॉजिस्टिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे ठीक, डिप्लोमेटिकली भी आप बायलैटरल के मामला उठाएं और आई थिंक मल्टीलैटरल फोरम में भी उठाएं। वेरी तो ये चार कॉम्प्रिहेंसिवली पहलू। एक्सप्लेन्ड। और इसमें देखिए, हमें याद पड़ता है कि जो पहला ऑपरेशन था वो प्रॉब्ली 2007 में शुरू हुआ था, और मैं क्योंकि उस वक्त सवात भी जो है वो गया था, तो तब से लेकर अब तक ये जो सिविलियन आपने जितनी चीजें मेंशन की है, इसके ऊपर हमने बहुत कम प्रोग्रेस जो है वो देखी है, एंड दैट्स व्हाई ये ऑपरेशन अभी भी करने पड़े हैं। बट मुश्तबा, गो अहेड, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन, Yeah. तो Thank you for your valuable insight, Mr. Mohammed. But I would like to move on with the challenges, the potential challenges that this operation can face. So my next question will be directed to Brigadier Mahmood Shah. Acha, so we know many infrastructure developments projects under CPEC have been impacted by resurfacing terrorism. So, sir, we would like to also know the role of Operation Azm-e-Istehkam in Pak-China relations. How will it impact our relations in during the phase 2 of CPEC? Please, sir. क्योंकि इसमें ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे लोगों का ये इंप्रेशन है कि शायद ये जो सीपैक फेज 2 है उसके साथ जुड़ा हुआ है ये ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम। जी बिल्कुल, ये भी कहा जाता है, एंड आई थिंक अदरवाइज आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव पीस in our society, and anything which sort of threatens our society in that manner, physically, like these terrorists are doing. So taking action against them is imperative. There is no two ways about it. The second is that why there is
For that, the basic reason is that probably some of the superpowers, they want that we should not have this CPEC, and they have conveyed this to us verbally and to writing many times. And we have said, sorry, this is our country and we can do what we like to do. So we have decided to have phase 2 of CPEC. And I'm sure the Chinese government must be concerned about their citizens who come here and work in the CPEC. And I think the physical sort of threat that is to the Chinese is far more like you have seen in the Shah incident. So that is in a manner reassuring to the Chinese government that we will do all we can do, and we think we can implement law and order within our boundaries. And for that, in spite of the fact that police and other administrative agencies are available in the area, but should there be a need, the military component will also be moved at their back so that they are assured that you can go ahead. And of course, in this process, a message will go to China. Some people tell to me that it is being done on the pointation of a foreign government. I said whether they point at it or they do not, we know our responsibility. That if we have Chinese citizens working for us in a project, we got to provide them necessary protection. And that we not only assure them verbally, but we do it practically on ground. And we can do so. And I think we have had much tougher targets, like you had the SWAT, you had the South Uzbekistan, North Uzbekistan, and they were thrown out of this area. And these are the elements who are now, and they are playing here, hide and seek sort of thing, and we will comb them out from this area. And as the exercise starts, the presence of the army not only says physical presence, it is reassurance to our population and also these law enforcing agencies. तो आपको we are present. लगता है कि वो गारंटी है। अच्छा, हमारे पास अब वेरी क्विकली टाइम क्योंकि थोड़ा जो मैं पहले कलीम इमाम साहब और मोहम्मद अली साहब दोनों की क्विकली जो है वो आई वांट टू टेक चैलेंजेस क्या देख रहे हैं, किन चीजों पे डिपेंड करेगी इस ऑपरेशन की जो है वो सक्सेस। कलीम इमाम साहब पहले गो अहेड, अ मिनट एंड अ हाफ इसको आप अगर कंक्लूड कर दें। ओके, बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं कि देखें हमें बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट करनी चाहिए, और चाहे वो हम फॉरेन एंटिटी के लिए कर रहे हैं या दुनियाई तौर पे हमें प्रायोरिटी अपने लोग रखने चाहिए। वैसे भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए और क्राइम के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये कि जो फॉल्ट लाइन्स है उसको आप खत्म करें। फॉल्ट लाइन्स जहाँ भी डेवलप हो रही हैं आप उसको खत्म नहीं करते, और जो लोग दुश्मन हैं या जो हॉस्टाइल कंट्रीज है वो उसका फायदा उठाते हैं। तीसरा, मैं अपने सर्विस के तजर्बे से आपको बता देता हूँ कि मोस्टली जो चीजें सारी हो रही हैं, जैसे मोहम्मद अली साहब ने बताया, हमारे होम ग्रोन इश्यूज हैं बहुत सीरियस। अच्छा, और जिसको हम डिनाइल भी देते हैं, लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं देते, लोगों की इंक्लूसिविटी नहीं होती, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच पीपल आर टेंड टू टेक लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स एंड देन के बहती गंगा में हाथ धो लो या जो भी चाहते हैं कर लो। इट्स सो इम्पोर्टेंट। अब आपने जो सवाल किया कि क्या चैलेंजेस होंगे इस ऑपरेशन के, देखिए इस क्वेश्चन के चैलेंजेस ये डेफिनेटली कैजुअलिटीज के हमें चांसेस हैं, डिस्प्लेसमेंट के हमें हैं, क्या हम इसको बीच में छोड़ देंगे या हम इसको जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्या हम इस चीज के लिए भी तैयार हैं कि अगर हम अच्छा नतीजे पे पहुंचते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड क्या है। अब आप थोड़ा सी मिसाल दे दें ना, आपने अफगान को यहाँ से निकाला जी, और उसकी वजह से मैं आपको बता नहीं सकता कितनी करप्शन का एलिमेंट हुआ है लॉ एनफोर्समेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये रेफ्यूजीज को जो हैंडल करते हैं वो चले भी गए, कुछ रुक भी गए और बाकियों को जाने बाकी नहीं गए, और आप देख लीजिए तो से बाद वो वापस भी आ जाएंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि हमने इसको सस्टेन। चैलेंजेस ये हैं कि लोकल को अपने साथ बहुत ज्यादा रखना है, उसको ट्रस्ट करना है, लोकल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा जो है उस हवाले से आपने देखना है।
So आई थिंक आपको लगता है कि वो इसमें जो है वो की रोल जो है वो प्ले करेगा, राइट? मैं क्विकली मुश्तबा, गो अहेड. आई थिंक Sure. Lastly, I would like to ask Sir Syed Muhammad Ali about the potential implications, the future implications this operation will have. Can you please explain that briefly since we're short on time, sir? जी मोहम्मद अली साहब. Gee, sure. Well, the first thing I want to clarify, this is not a military operation. It's a counterterrorism campaign which is multi-pronged and multi-domain. And the most important fact that I earlier also underlined is that the kinetic and the military prong will not achieve sustainable and long-term desired objectives unless the causal factors which have led to the creation of this phenomena of terrorism are addressed in the civilian domain. And the causal factors are four. First is the bad governance. Governance, if the governance is efficient, it is effective, then the people trust the state and the political representation. So Right. the most important thing is good governance. The second aspect is the political ownership beyond ethnic, provincial, and sectarian politics. That is the fundamental requirement. The third requirement is isolating the terrorist movement ideologically. The role of our ulama, not at the national level, but at the local mosque and madrasa level, is very important. That violence and use of force and extremism and intolerance need to be abhorred and criticized and condemned by our madaris across the country at local community level. Number four, the economic support base, both through criminal networks and nexus at the domestic level, and the foreign funding coming from whatever source needs to be drained, identified, and tracked and recorded. That is the fourth aspect. And the fifth aspect is the diplomatic front. Those countries which are overtly or covertly providing funds or resources or individuals involved in supporting and abetting terrorism need to be engaged at the diplomatic level. But I think Without these हम four एक things, चीज पे तो only हम सारे military एग्री role कर will रहे हैं not कि be the successful. civilian part is the key factor in this operation. So thank you so much. हमारे पास अब time जरा we have run short of time. Kaleem, Imam साहब, it was a pleasure. Brigadier Mahmood Shah साहब, Muhammad Ali साहब, thank you so much. It was lovely having you over. मेरा ख्याल है इस पे discussion और भी हो सकती है. So we'll bother you gentlemen, inshallah, in the future as well. thank you. Thank you for having me. Thank you very much. Thank you. Okay. I believe with this, our webinar comes to an end. I, on behalf of the Center for Law and Security, thank the speakers for their valuable input. Thank you for all joining us. Thank you all for joining us, and we would love to collaborate with you in the future as well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Mujtaba. Thank you.